Welcome in DK Education. Hello friends, good morning to all of you. Today's in the class ninth, the topic is second law of motion. Here myself before you, DK sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar, Sitamarhi. And we have to study about the topic second law of motion in today's class in the physics class ninth. The first law of motion we have already read about in the previous classes. Now in this topic we will talk about the term momentum. Momentum, force and time, acceleration. Here there are the four terms: momentum, force, time and acceleration. About momentum, force, time and acceleration, we know the definitions of these terms in previous classes. But once again, I repeat it again only. Momentum is the momentum of a body is the product of mass and their velocities. मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को किसी भी वस्तु का हम मोमेंटम कहते हैं. एंड फोर्स इज एक्सटर्नल फिजिकल causes that applied on a body, then it's change the position of the body or try to change it. After that time it means the period spent in doing work. जो भी हम कुछ करते हैं उसमें जो हमको पीरियड लगता है, कुछ आवर्त लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम. एंड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. आफ्टर दैट we combine all the terms in the second laws of motion. Here we see the rate of change of momentum. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the unbalanced force applied and takes place in the direction of force. It means here the rate of change of momentum of a body, it means this is the acceleration. When the body start to move, then they become accelerated. वह जब भी कोई वस्तु मोशन में होता है तो ऑटोमेटिक उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है. फिजिक्स में हमको ऐसा समझना है. आफ्टर दैट वो जो होता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स. वह अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. ओके, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. ये अगर हम अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी, अगर किसी बॉडी पे फोर्स जो अप्लाइड होता है, जैसे मान लेता हूँ कि यह एक हमारे पास मार्कर है, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, इसे पुश किया तो आगे की तरफ इसकी कुछ न कुछ दिशा होगी. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेटेड बॉडी. यह जो एक्सेलरेशन इसमें आ गया, मोशन इसमें आ गया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारा इस पर अप्लाइड किया गया फोर्स होगा. आफ्टर दैट एंड तो अप्लाई किया गया जो फोर्स है वह क्या होता है कि टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये अनबैलेंस्ड फोर्स की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं. फोर्स हैविंग टू टाइप्स वी हैड सी ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. व्हेन वी अप्लाई ए बैलेंस्ड फोर्स ऑन ए बॉडी, then there is no displacement. But in unbalanced force displacement is needed. If displacement is zero, we cannot say the force is unbalanced force. So unbalanced force applied and takes place in the direction of force. ये अब क्लियर हो गया होगा. आफ्टर दैट F, change in momentum if
let a body starts to move from its initial velocity u and final velocity v, then the mass of the body is m. ये m जो है यह v के साथ भी है और u के साथ भी है, बिकॉज ये मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम में हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास एंड वेलोसिटी मीन्स mu and mv. Here mv is the positive and more than the mu. So अगर we talk about this term change in momentum, then change in momentum is equal to mv minus mu. Okay. After that m is as a common. After that v minus u in the cost. mv minus u. After that we see here the term t, because from u to v, u से v तक आने में u से v में जो मोशन में चेंजिंग आया उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा हुआ है, टीनी टाइम इन्वेस्ट इन दिस सिचुएशन. आफ्टर दैट वी लेट द टाइम t, then the definition of the force change of momentum. Force is the directly proportional to the change of momentum. So we get from that definitions and that operations F is equal to mv minus u upon t. After that the first equation of motion we know that v minus u upon t is equal to acceleration a. So we put the a at the place of v minus u upon t. And m is the constant here, f is equal to m into a. F here, f is called also impulse. Impulse is a type of force. Then impulse is equal to f into t, and f into t, this is equal to mv minus u by the cross multiplication. Change in momentum, mv minus u, it is also called the change in momentum. Now अब हम थोड़ा सा विचार कर ले कि आखिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कहाँ होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. Why is needed the second law of motion? When we catch the cricket ball in the field as a fielder, then we pull our both hand in the back side. Due to the momentum gradually decreases. अगर उसको पकड़ करके हम खींचते हैं तो बॉल का जो मोमेंटम है वह धीरे धीरे कम हो जाता है, और कम होने के कारण हमको चोट कम लगती है और हमारा हाथ फ्रैक्चर होने से बच जाता है. तो बॉल के मोमेंटम को कम करने के लिए फॉर द लेसर स्पीड ऑफ द बॉल वी यूज हियर मोमेंटम के कारण ही वस्तु का स्पीड कम हो गया, जिसके कारण हमारा हाथ फ्रैक्चर होने से बच गया. इसीलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट ए क्रिकेटर, ए फील्डर बैक हिज हैंड फ्रॉम व्हाइल इज कैचिंग द बॉल. जब बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है. दूसरा उदाहरण देते हैं इसका कि एथलेटिक्स कोई होता है जो ऊपर से जंप करता है तो नीचे का जो सॉइल होता है, ज़मीन होता है, उसको उड़ेल दिया जाता है, कुदेड़ दिया जाता है कि उसको चोट, ऊपर से जंप करे नीचे आए उसको चोट नहीं लगे. तो ऊपर से नीचे आता है, गिरता है, तो उसके बॉडी में जो स्पीड होता है उसमें जो मोमेंटम होता है उसके मोमेंटम को कम किया जाता है ताकि उसका बॉडी सेफ रहे और चोट लगने से बच जाए. इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल ये हुआ कि एथलीट का जो स्थिति हुआ, एथलीट के लिए क्या किया जाता है कि जंपिंग प्लेस को गद्देदार बना दिया जाता है, स्मूथ बना दिया जाता है और स्पॉन्जी बना दिया जाता है कि उसको चोट कम लगे ड्यू टू द
लेसर उसका जो मोमेंटम हो वो क्या होता चला जाए, लेसर होता चला जाए, मतलब कम होता चला जाए। एंड इन द फर्स्ट सिचुएशन, और फर्स्ट सिचुएशन में हम देखें कि ये हमारा फोर्स के साथ एम v माइनस यू अपॉन टी, इसका क्या संबंध है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको फोर्स की परिभाषा भी मिलती है। वी गेट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लाइक हियर अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स जब भी होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स की परिभाषा भी हमको इससे मिल जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस was the second law of motion. I hope you will be follow it and subscribe my channel and share my channel. After that, at last, if you have any problem in this topic, in this term or second law of motion, then you can contact me and WhatsApp me, comment me. I will try to satisfy you anytime anywhere. Okay, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।